It's been a long road, this election. We leave Ahmedabad for northern Gujarat, with all its 6 districts and 32 seats. The seat of power, Gandhinagar's well-maintained thoroughfares, quickly fade into the region's smaller towns. The Gujarat model starts to creak, where rather than a great highway, the obvious markers of development are missing. And as we reach Patan district, its expansive barrenness echoes with undelivered promises. पूछना तो दिए ना आपकी क्या समस्या है, कोई पूछता ही नहीं है कि कौन सी समस्या है। सब व्यापार में भाजपा वाले सब बिक जाते हैं, कांग्रेस वाले भी सब बिक जाते हैं, ऐसा है। यहाँ अभी समस्या है तो ज्यादातर रोड, रास्ता, पानी, गंदगी, सबकी समस्या ज्यादातर है और प्रजा को वही चाहिए जो यहाँ प्राथमिक सुविधा मिले सबको। सबसे ज्यादा बड़ी समस्या पीने के पानी की है। पाटन में नहीं आता है पीने का पानी आता है लेकिन इतना स्वच्छ नहीं आता है। आए दिन सब देखो तो हॉस्पिटल के अंदर ही होते हैं, क्योंकि इतना अच्छा पानी पीने को आता ही नहीं है। अब परिवर्तन चाहिए हमको, परिवर्तन चाहिए हमें। सबसे पहले तो एजुकेशन का प्रॉब्लम है। यहाँ एक भी गवर्नमेंट स्कूल अच्छा नहीं है। प्राइवेट स्कूल सब अच्छे हैं और उसका फीस इतना ज्यादा है कि हर घर में 2 लड़के होते हैं, एक लड़की या लड़का, 2 लड़के होते हैं एक परिवार में, उनका जो फीस होता है हर साल में 40 से 45 हजार होता है। और ऐसे 12 महीने में जैसे 10 साल लड़का पढ़ता है तो एक घर का कम से कम 7-8 लाख रुपए खर्च होता है। सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम है तो रोजगारी की समस्या की है। रोजगारी मिलती ही नहीं है ज्यादातर, क्योंकि जीआईडीसी ने ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और जो रोजगार मिलती है उनका सैलरी 5,000 या 6,000 होता है, उसमें किसी का घर नहीं चलता। वो अपना खर्चा उठाए, घर का उठाए, क्या उठा सकता है। Northern Gujarat, 32 seats go to polls in the second phase of polling of the 5th of December. In 2017, of the 32, just 14 were won by the Bharatiya Janata Party, seats which were largely in the urban pockets. 18 in the rural belt were won by the Congress. The composition, demography, Muslims, tribals, OBCs, Dalits, communities which are usually not seen as vote banks traditionally of the Bharatiya Janata Party. The BJP is looking to change that dynamic. The Aam Aadmi Party trying to make inroads in very smaller pockets, but not as much as they pushed, say, in Saurashtra or in the south of Gujarat. The Congress hoping that its local leadership will be able to hold on to its vote. If in the first phase, Saurashtra was the big challenge for the BJP, in the second phase of 93 seats that go to vote on the 5th of December, north of Gujarat, with its 32 seats, will be its biggest challenge. If the BJP has to touch the political holy grail of surpassing their own career best in 2002 of 127 seats, then the party needs to flip North Gujarat. Poonami, you've been covering the BJP's campaign here. Why is there a sense of aversion to the Aam Aadmi Party's campaign? They don't come for the debates here where the Aam Aadmi Party is concerned. Why is it? Are they a little scared of the Aam Aadmi Party? No, they basically don't want to. They do know that the Aam Aadmi Party is making a lot of noise in this campaign, and they don't want to give it much significance. The BJP has constantly been saying that this is a bipolar contest. This is not a triangular contest. Of course, they sense an amount of threat from the Aam Aadmi Party. This is a party which is in power in 2 states at the moment. MCD elections, it is a stiff contender for the Bharatiya Janata Party, which has been ruling the MCD for a while, and this time there is a buzz that the Aam Aadmi Party is gaining in the MCD. So in Gujarat, obviously, this is their home state for the top 2 of the party. They don't want to give too much credence to the AAP's campaign, because they do realize that if they in a sense acknowledge them as the challenger in this contest, then they are basically escalating their campaign. So hence they obviously symbolically they don't want to do that, and hence they don't want to argue against them in television debates, etc. But there is a sense of earlier there was no mention of the AAP, Right. Okay, but recently I've noticed there is a mention of the AAP without naming them. So there is Congress and Congress-like smaller parties that are being referred to. Those that want to target your vote bank, that play vote bank politics.
You remember the whole Revdi politics reference as well. While that, of course, is not being repeated as much in the campaign, and I do realize that because that possibly is, the BJP realizes maybe there are people who do want those freebies that the Aam Aadmi Party offers or the Congress Party offers. So if you keep targeting that, if you keep highlighting that, it might just be detrimental and it might boomerang. So there is no mention of Revdi politics for a while, but AAP is being suddenly acknowledged, but in a way where it is not being named. The Congress is being named, but not the Aam Aadmi Party. Not the Aam Aadmi Party. A lot is being said, of course, in terms of the campaigning of the BJP, carpet bombing in terms of both your biggest cabinet ministers. Rajnath Singh is going door to door, the defense minister in Ahmedabad. And, you know, even in perception. But is this the way the BJP fights possibly every election? That's right, you know, I mean, it's not anything new that they're doing in Gujarat. You've seen UP, you've seen Bengal, you've seen recent elections where they have this thing of carpet bombing. Yesterday itself, there were 108 rallies, road shows, door to doors by the top leadership, prominent faces and star campaigners of the Bharatiya Janata Party. This is how they campaign. You might say, oh, is the Prime Minister of the country or a star pracharak of the Bharatiya Janata Party? But the fact is the BJP says, well, he is our star mascot. This is the face that wins us votes. Why won't we want to capitalize on it? And the Prime Minister, of course, is absolutely okay with that because he knows he is popular. He knows that, you know, he could turn the tide for the Bharatiya Janata Party in weak spots. Amit Shah himself speaks about the fact that, you know, in this campaign, from what I've heard, and he is very clear, put me on road shows and rallies in weaker seats. What is the point of me going to seats that we know are safe seats for the Bharatiya Janata Party? There's absolutely no point to be gained over there. You know, he's very clear about it. So this is how the Bharatiya Janata Party has been working, and he and the entire top leadership of the party has been canvassing that Amit Shah will finish a campaign, say, in Ahmedabad city like tonight, as he's been doing over the last few days. He'll finish it, the last road show will be here, the last sabha will be here, finishes it at about 9-10, reaches the BJP media center, sits there till past midnight. Every day, doing the calculations, seeking ground reports. So that is how the BJP functions, and that's how the machinery functions. How much of a prestige battle is it for the Prime Minister where Gujarat is concerned? It's an obvious question. It is an obvious question. This is his home state. This is not a state where he can afford to lose. Right. This is the state where he has gone around saying from the start of the campaign that Narendra is here campaigning on the ground so that Bhupendra breaks Narendra's record. Narendra's record is 127, and that is the record that he wants to break this time round. Obviously, you can't break, I mean, you can obviously, but Madhav Singh Solanki is a huge target, but, and C.R. Patel will tell you, the state president of the Bharatiya Janata Party, that BJP will touch 150, cross 150. He's extremely confident about it, but the Prime Minister is, of course, pitching for 127 plus. 127. Patel has 4 seats. In 2017, 3 went to the Congress and 1 to the BJP. This time, there is also the Aam Aadmi Party in the fray. यहाँ की राजनीति कैसे देखते हैं? इधर तो बहुत बढ़िया चल रही है बीजेपी बढ़िया चल रहा है, पर पाटन में तो बीजेपी नहीं है ना, इधर कांग्रेस 5 साल से आई है कांग्रेस, कुछ भी नहीं हुआ। इस बार आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगा। किसी पार्टी पर विश्वास है? मैं किरीट भाई पटेल, कांग्रेस क्यों पसंद है? कांग्रेस पहले से पसंद है। पहले से पसंद? हाँ, उसकी मुखबारी नहीं है, सत्ता दाम है, सब कोई चीज की वो नहीं है, सब अच्छा है कांग्रेस के राज में। इसमें अभी भाजपा के राज में बहुत मुखबारी आ गई है। वैसे तो हमारे जो विधायक जी है किरीट पटेल का काम जो यहाँ पर बोल रहा है जी, कांग्रेस के विधायक किरीट पटेल जी, और कांग्रेस पक्ष जो है वो हर जनता की आवाज है। पिछले कई वर्षों में हम देखें तो कांग्रेस ने पीड़ितों किसानों का आवाज उठाई है, पिछड़े वर्गों की आवाज उठाई है, युवाओं की आवाज उठाई है, चाहे महिला सशक्तिकरण हो। बीजेपी बहुत अच्छा लगता है, बीजेपी अच्छा लगता है। स्टेट दिल्ली पार्लियामेंट सुधी हमको बीजेपी की चाहते हो, बीजेपी आना चाहिए। हाँ, बीजेपी आना चाहिए। की राजनीति तो अभी तक तो जो चल रही थी बिल्कुल गंदी चल रही थी, इलू वाली चल रही थी। अभी केजरीवाल जी आ रहे हैं। इलू क्या होता है? इलू मतलब दोनों मिल बांट के खा रहे हैं, भाजपा वाले और कांग्रेस वाले। कांग्रेस वाले बिक रहे हैं, भाजपा वाले खरीद रहे हैं, ऐसा चल रहा था। लेकिन अब
केजरीवाल जी की सरकार आने का चांस लगता है यहाँ पे, और यहाँ पे तो श्योर आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। Political disruptor Aam Aadmi Party has entered the Gujarat amphitheatre. While their campaign was on steroids in phase 1, the second phase in north and central Gujarat, they are slow. The party is believed to be weak here, but not in spirit when it comes to Bhagwant Mann, the Punjab Chief Minister. मान साहब थोड़ी गुजराती तो सीख गए होंगे अभी, गुजराती तो सीख गए होंगे, इतना कैंपेन कर रही है यहाँ पर। हाँ, मैं वो सीख गया हूँ कि पंजाब के लोक लाडीला मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी आपके बीच में पधार कैसे तो कनेक्ट कैसे हो रहा है आपका? काफी टाइम आपने बिता लिया है यहाँ पर। मैंने पूरा गुजरात देहात में, जहाँ पर पहाड़ियों में, जंगल में, जहाँ आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, जहाँ कोई नेता पहुंचे ही नहीं, वहां तक अनटच एरिया में जाके आए हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए। एक युवा से मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ विधायक कौन है? कहते हैं भाजपा वाला है। मैंने कहा जीतने के बाद कितनी बार आया है? कहता जीतने के बाद की बात छोड़ो जी, वोट मांगने में नहीं आते हमारे पास। तो इतना लावारिस छोड़ा हुआ जनता को इन्होंने। तो ये सब 27 साल पुराना सिस्टम बदलना चाहते हैं। मैं 8 महीने पहले चश्मदीद गवाह हूँ, बिल्कुल ऐसे गठ पंजाब में होते थे और सर्वे में नहीं आते थे। आपको लगता है कि इस बार जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी का नहीं है इतना ज्यादा जो नंबर है, तो क्या आम आदमी पार्टी, मतलब ऐसा क्या है कि आपके नंबर इतने जबरदस्त आ रहे हैं, बाहर किसी और के नहीं आ रहे हैं? देखो बात यह है, आम आदमी पार्टी है, हम सर्वे में नहीं आते, हम सीधा सरकार में आते हैं। और वो नफरत की राजनीति करते हैं, हम समाज की राजनीति करते हैं। हम करते हैं कि स्कूल अच्छे हो जाएंगे। पंजाब की तरफ बिल लेके आया हूं मैं, 25,000 बिल लेके आया हूं, जो पंजाब में जीरो, 61 लाख घरों को जीरो बिल आया है इस बार। 67 लाख को नेक्स्ट बिल, 71 लाख को जनवरी वाला बिल। और हम कर्जा भी नहीं ले आए। ऐसा नहीं है कि हम डेट में डुबो देंगे स्टेट को, हम लीकेज बंद करते हैं। खजाने में पैसा आता है, पब्लिक को देते हैं। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। अगर ये फ्री की रेवड़ी है तो 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? कि हर उसमें हर खाते में 15 लाख आ जाएगा। और भाजपा का तो मैनिफेस्टो का भी नाम बदल जाता है। कभी कहते हैं ये संकल्प पत्र है, कभी कहते हैं घोषणा पत्र है, कभी कहते हैं मैनिफेस्टो है, क्योंकि लागू तो करना नहीं है। पर आपको लगता है इस बार नहीं तो अगली बार सौराष्ट्र आपके लिए मालवा हो सकता है? नहीं, इसी बार। आपको लगता है इसी बार होगा? मैं कभी मुझे ये लगता है कि मैं कहीं बठिंडा में या बरनाला में या मानसा में या संगरूर में घूम रहा हूँ, इतना जुनून है। एक बार चीज बोली जा रही है, पंजाब की मीडिया में भी बोली जा रही है कि जो सीएम है वो पंजाब में है, बाकी सारे एमएलए जो पंजाब के हैं वो गुजरात में है, आप गुजरात में हैं, सभी गुजरात में हैं, पंजाब कौन चला रहा है? अच्छा, मोदी जी कहाँ हैं? योगी जी कहाँ हैं? शिवराज चौहान कहाँ हैं? असम के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? हिमाचल के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? भाजपा के 450 एमपी कहाँ हैं? दिल्ली में गलियों में। अमित शाह जी कहाँ हैं? तो हमारा हक है, हमारी पार्टी के लिए हम वोट मांग सकते हैं। क्या बात हो गई कि हम पंजाब में अगर जीत गए तो पंजाब में रहना है? तो प्रधानमंत्री जी बताइए, एक दिन में 7 रैलियां, एक दिन में 7 मैं भी करता हूं, लेकिन वो उसमें आता नहीं है। और आपके तो एमएलए भी यहाँ घूम रहे हैं, भगवान मान साहब। तो एमएलए उनके भी घूम रहे हैं, उनके एमएलए भी यहीं पे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया, वो नहीं आए, तो उनका मैं कुछ नहीं बोल सकता। कांग्रेस खत्म। पंजाब कौन चला रहा है अभी? पंजाब कौन? मैं चला रहा हूँ। कब तक है यहाँ पर गुजरात? लास्ट 2 दिन। पूरा जोर लगा देंगे? पूरा जोर, अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। को क्या चाहिए? को क्या चाहिए? The Aam Aadmi Party in Gujarat mere optics or actual political heft. Most political reporters have been caught between that one question. The hours on the election train can be long and punishing, as they are rewarding. This was my small little reward to visit the Patola Sari Museum in Patan. Not just a sari museum, but an ode to the complex art of weaving a Patan sari.
The art form of Patan Patola saris have been passed down through 40 generations of the Salvi family since the 11th century. Patola saris' unique making process and exceptional precision means that keeping the 900-year-old art form and tradition alive is no mean feat. And this family is doing it with this museum as an ode to the craft form. Our family is working here since 11th century. So it's been 900 years in Patan. Before we were in South Maharashtra in Jalna, and the King Kumarpal migrated us in Patan in 11th century. So it is centuries old craft, and I'm working here since 22 years to carry on this craft. The tradition. Yes. So you're a trained architect. Yes, I'm an architect, but I have joined this tradition to. So it's only the two of you from your family who does? No, we 8 to 10 people are working here. 8 to 10? Yes. So it's been passed on from family to family? Yes. What generation are you? I'm 28th generation of this family. The 28th generation who's into this art form. Yes. You hope to pass it on? Yes, obviously. Obviously. थोड़ा आर्ट फॉर्म के बारे में आप बताएंगे? पटोला में मेन आर्ट क्या है? In Patola, first design is given on the thread, then it is woven. First we give design on the warp. Same way we have to dye weft, and it should be exactly dyed. So at the time of weaving, warp and weft with both will match. And this skill was developed 1000 years back, when there were no any method to give design on the cloth in the world. From that time, this skill was developed. In Patan, we are from 11th century. Now our only family who is carrying this craft in traditional form with natural dyes. How long does it take you to weave one sari? With the involvement of 4 to 5 master weavers, it takes 4 to 6 months to weave a sari. 4 to 6 months yes. to weave a sari, and it's 4 to 5 of you master who do weavers, it. Master yes. weavers who do it. How much, that's so much hard work. How much does that sari retail for finally? The price starts from 1,50,000 rupees and onwards, depends on design and colors. And do you have enough orders, I'm sure? Yes, we have enough orders by More than enough, I'm sure. Yes. So you pick and choose who do you have to weave for, or how do you entertain? Because I'm sure the whole world wants a Patan sari. Yes, so we have backlogs for 2 to 2.5 years. If I place an order today, when will I get a Patola sari? First I have to afford it, then is if I place an order, when will I get it? So if you place the order with the vegetable dyes, it will take 2 years to get it done for you. 2 years to get it done for me. Oh my God, that's like the Birkin's bag, which is, I would prefer the Patola sari to a Birkin's bag, but that's the wait that you have to go through. I want to ask you, have you not as a family thought of expanding your business? Because, if it's a 2-year waiting, or do you want to make it exclusive? This is the heritage of our India. So if it get done commercial, then there will be no value of this craft. So we never run after the money to expand this business. We are keeping it in its original form. So there is no chance to make it commercial. Sir, family mein, only in the family? Yes. You don't want others to get involved? No, because if anybody came, everybody came in the sense of commercial base. So they learn little bit, then they start duplication of Patola. So original art is not continue easily. So in the entire world, is it just your family who are the original artists of, it is an art form? Yes, you can say we are the only family who is working this craft in its original form with the vegetable dyes. With the original vegetable dyes? Rest of the in market what you get are all commercial products, and they make it with synthetic dyes, and there is no some criteria which is really Patola has to be. So what you get in the market is not the original? No, not pure Patan Patola, you can say, yes. Not pure Patan Patola. And what is your reason, other than just the commercial purpose, but just that the art form grows? What is your reason to restrict it only to 8 to 10 masters? We are forwarding to our next generation, so there is no any restriction, but we don't train outside people. As my uncle told you, we don't want it to be commercial. Only in the family? Yes, in the family, yeah. Only in the family.
You know, these stories happen during the time of elections. I'm sure you have seen many seasons of politics in Gujarat. What kind of Gujarat do you want? Kaisa Gujarat chahte hain? There are lots of schemes government gives, like monetary and everything. But we are just asking to government that you must have some plan for the artisans who are carrying on this kind of arts since the centuries. There must be a pension plan for the old artisans who have done the whole life for this craft. That is, and you must have recommend them with the several awards. That is all. Any art form. It could be any. And Gujarat is full of art forms. Full art form, yes. Full of art forms. But they should get pension, the old artists. Yes. We have all, the development is all, mine. And Gujarat is the role model for India in terms of development. So, I'm proud to be a Gujarati. Proud to be a Gujarati. North Gujarat in topography, small hilly tracts to large arid expanses. A land parched not just by the lack of water but also development. It's people here, devoid of the opulence that you sometimes see in the rest of Gujarat. They seem simpler, commoner, gentler. And as the sun goes down this election, it is them who understand the irony of this 5-year story. With all its bells and whistles, this electoral carnival will move on. What would be left is what's left every 5 years, a slew of undelivered promises. And it is here that even for a short while I catch a breath before the proverbial ball drops. But it is the final push, and campaign, though exhausted, still hasn't tired out. Close to midnight, we meet Congress leader Jignesh Mevani in Banaskantha, his constituency of Viramgam. First of all, campaign कैसा जा रहा है Jignesh? कैंपेन बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया, रिलैक्स हूँ, कूल हूँ, फ्लोट कर रहा हूँ, इतना जबरदस्त प्यार है, मोहब्बत है लोगों का, और मेरी खुद की जो उम्मीद थी, अपेक्षा थी, उससे भी बहुत बेहतर जा रहा है। जो आपकी अपेक्षा थी उससे बेहतर जा रहा है, आपको कैंपेन लग रहा है। इस बार बहुत सारे और प्लेयर्स हैं, AIMIM भी है, आपको लगता है वो थोड़ा आपका जो पिच है बिगाड़ दिया है? कुछ नहीं हुआ ऐसा, जनता ने मुझे अपने कंधों पे बिठा दिया है। तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं, ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं है। मतलब कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ये मानते हैं? हाँ, लेकिन वो मुझे ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। आपको अफेक्ट नहीं करेगा? आई एम रिलैक्स। आप रिलैक्स हैं। पिछले इलेक्शन से अब तक जो कहते थे कांग्रेस के पोस्टर बॉयज थे, उनमें से सिर्फ एक आप ही बचे हैं कांग्रेस। क्यों नहीं, जगदीश ठाकुर है, अमित चावड़ा है, परेश दानानी है, अर्जुन मुडवाड़िया है, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर। तो जिनको जाना था तो वो गए, जिनको टिकना था वो टिके, वो अपने ईमान पर कायम है। ये जो लोकल आपका कैंपेन चल रहा है, जिसमें ज्यादा बड़े कह रहे हैं साइलेंट कैंपेन चल रहा है, इसमें आपको लगता है कांग्रेस? साइलेंट कैंपेन से ज्यादा एक प्रकार से साइलेंट वेव है। अभी आप जो उत्साह देख रहे हैं वो सब जगह पर नहीं है, मेरे यहाँ पर भी। वाटर ने अंडर करंट है, वाटर ने एक प्रकार से मानो मन बना लिया है। सिंपल कारण ये, गुजरात की और इस मुल्क की 70-75% आबादी 1100-1200 रुपये में गैस का सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकती, 3000 रुपये में तेल का डिब्बा अफोर्ड नहीं कर सकती, 6000 स्कूल गुजरात में सरकारी बंद हो गए। कहाँ पढ़ाएगी ये लोग अपने बच्चों को? दूध महंगे, सब्जी महंगी, करियाना महंगा, पेट्रोल, डीजल, तेल का डिब्बा, गैस की बोतल, बच्चों की दवा, कैसे जिएंगे लोग? 2017 में भी बहुत सारे मुद्दे थे, एक तो जो पूरा एजिटेशन था वो अभी नहीं है, तो ऐसा मतलब जो माहौल 2017 का इस बार नहीं लग रहा है? इस बार का माहौल और भी गजब है, इसलिए कि इस बार की लड़ाई इकोनॉमिक मुद्दे पर है। बात जब पेट की आती है ना, तो लोग जात पात थोड़ा भूल जाते हैं, और इस बार बेरोजगारी और महंगाई के सवाल पर मतदान होगा। इस बार और यूनिक है क्योंकि ये एक त्रिकोणा
चुनाव है, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, क्यों आम आदमी पार्टी का कुछ फर्क, कोई वर्चस्व नहीं? आप अपना ये फुटेज सेव करके रखिएगा। 9 तारीख को सुबह मेरा दोबारा आप इंटरव्यू करिएगा। एक सीट उनका नहीं आ रहा है, आम आदमी पार्टी का नहीं आ रहा है एक सीट, कहीं पर भी, सूरत कहीं पर नहीं आ रहा है। आपका कितना आएगा? हमारा 120। अच्छा तो आप भी भविष्य, तो आप भी भविष्यवाणी करेंगे? अरे हमको तो गुलाल उड़ाना है गांधीनगर में, सरकार बनानी है। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस 500 रुपये में इन बहनों को गैस का सिलेंडर देना है, 3000 इंग्लिश मीडियम की स्कूल बनानी है, 10 लाख रोजगार खड़े करने हैं, 1 लीटर दूध पर 5 रुपए का सब्सिडी देना है। अब भाजपा ने इतनी सारी चीजें कर दी हैं, जो पूरा सौराष्ट्र का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है सब बदल दिया है, यहाँ पर भी बहुत फेरबदल। उससे क्या होगा? सरकार भी बदल दी, पूरी आपके कितने सारे कांग्रेस के लीडर्स उधर चले गए, पूरी कैबिनेट भी बदल दी, तो उससे क्या हो जाएगा? जो 70 बहनें विधवा हुई जहरीली शराब वाले कांड में, वो तो हुई, तो कैबिनेट बदलने से क्या होगा? तो सारे आपके खुद चले गए कांग्रेस के लीडर। कोरोना में जो कबाड़ा हुआ वो तो हुआ, ऑक्सीजन की एक बूंद के लिए गुजरात की जनता तरसती रही। और जो आपके लीडर जो वहाँ पे गए हैं, जिनको मैं कहा ना, जिनको जाना था वो गए। हम लोग टिके हुए, हम लोग लड़ेंगे। तो आप कॉन्फिडेंट है इस बार? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ज्यादा बड़े लीडर्स नहीं दिखाई देते आपके साथ, राहुल गांधी या कोई भी जो बड़े लीडर, तो आप सबसे बड़ा लीडर मानते हैं अपने आप को कांग्रेस का? जगदीश ठाकुर है, अभी कन्हैया कुमार कैंपेन में लगे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी लगे हैं, अशोक गहलोत साहब लगे हैं। लोकल लीडर, ये जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल लीडर से काम निकल जाएगा। लोकल लीडर है ना, जगदीश ठाकुर इतने स्ट्रॉन्ग लीडर है हमारे, अर्जुन मोढवाडिया है, सिद्धार्थ पटेल है, परेश दानानी है, इतने सीजन लोग। ये सीजन लोग 2017 में चुनाव हार गए थे। हाँ, लेकिन बहुत करीबी मामले से ना, चुनाव में हार जीत होती रहती है, इस बार जीत जाएंगे। इस बार आपको विश्वास है? आपकी पक्का विश्वास है, कांग्रेस वापस सरकार 110%। Elections are a peculiar time. Its narrative can be all too consuming. The campaign sometimes deafening. जिन जिन लोगों को लगता है सीआर पाटिल ठगे, हाथ खड़े करें। But the unassuming, simple, common folk know too well the transitory nature of all of this. This political carnival will roll on to another state. The drums here will fade, only to pick up there. What will be left here is them with maybe a few unfulfilled promises.